capital investment. Therefore, it makes me feel odd that you're asking a question of actually have jobs been created or not. When projects are undertaken and money is utilized, and that it is utilized is coming through from the budget statement, how would the projects get completed without manpower, without jobs? Not all projects can be completed, even 1%, without human intervention. So obviously jobs are happening in the ground. So ma'am, I want to ask you, ma'am here. Ma'am, I want to ask you what percentage of taxpayers had moved to the new tax regime in the last assessment year? And is there a number that you expect, 50%, 60%, whatever? And number two, ma'am, there's a specific mention for expenditure towards MSMEs. Now, is there an estimate of how much, what was the dues that companies had claimed as expenditure and which has not actually been paid to the MSMEs? Sanjay, you want to answer on? On your second question, that is on the MSMEs, well, we don't have that data. Certainly we don't have that data. And it's not, I mean, we don't take that data from the taxpayers in their returns. So that data we will not have. But certainly, you know, we are all aware of this huge problem of timely payments not being made to the MSMEs. So in that direction, you know, this is certainly a positive step. Coming to your first question on the exemption-less regime, let me say that for companies, the 22% tax regime that we got, 61% of our tax now, the corporate tax, more than 60% is actually coming from the exemption-free tax regime. Individuals' data we will not have, but we are very hopeful that this particular scheme for individual taxpayers, the PIT, I think the majority would prefer. I mean, all of you, if you all do your own calculations, I think majority here would be now wanting to shift irrespective of their incomes and the deductions and exemptions that they claim. They would be finding it more attractive to shift to the new tax regime, majority of them. iQOO 11 हो गया इंडिया में लॉन्च एंड विदाउट वेस्टिंग एनीबॉडीज टाइम इट्स टाइम टू अनबॉक्स दिस डिवाइस. बट बिफोर आई डू दैट अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. हाई यू वॉचिंग गैजेट टाइम्स, दिस इज मी पावनी जैन और अब करेंगे इस बॉक्स को अनबॉक्स. एंड नाउ इट्स टाइम टू अनबॉक्स दिस हैवी रिटेल बॉक्स. इससे आपको पता चलेगा कि iQOO 11 के रिटेल बॉक्स में व्हाट ऑल कंटेंट्स डू यू गेट इनसाइड. लेट्स बिगिन. सबसे पहले आपको दिखाई देगा स्मार्टफोन, जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं एंड दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट ऑफ कोर्स यू एक्सपेक्ट इनसाइड द रिटेल बॉक्स. इसको निकालते हैं रैपर से जल्दी से. काफ़ी ही बढ़िया कलर ऑप्शन, एकदम एग्जैक्ट प्योर वाइट. इस कलर ऑप्शन का नाम है लेजेंड, जो कंपनी ने दिया है. पंच होल कैमरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑन द डिस्प्ले. पर बात तो करेंगे रेयर पैनल की. यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये रेसिंग स्ट्राइप. फॉर दिस पर्टिकुलर डिवाइस iQOO हैज पार्टनर्ड विद BMW M Sport. तो यहाँ पे आपको वो रेसिंग स्ट्राइप्स दिख रहे हैं. काफी वाइब्रेंट कलर्स हैं, रेड, ब्लैक एंड ब्लू, जहाँ पर iQOO की ब्रांडिंग भी है. कैमरा मॉड्यूल इज रियली वेरी बिग, रेक्टेंगुलर है, जिसमें 3 कैमरास आपको दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पर V2 की भी ब्रांडिंग है क्योंकि कंपनी ने इस स्मार्टफोन में दिया है V2 ग्राफिक चिप. इसी के साथ कैमरास की बात करें तो जो इसका मेन कैमरा है दैट इज अ 50 मेगापिक्सल. एंड इफ यू गाइस कैन लुक एट द कैमरा मॉड्यूल, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है और इसकी फील तो बहुत ही बढ़िया है. वाइट है और थोड़ा टेक्सचर्ड है, देखने में काफी सुंदर. और मैंने काफ़ी स्मजेस भी डाल दिए हैं ऑन द डिस्प्ले. इसको स्टार्ट करते हैं, साइड में रखते हैं और फिर देखेंगे बाकी के कंटेंट्स.
बॉक्स के अंदर आपको ये सब दिखेगा, सिम इजेक्टर टूल, इसके अलावा ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव केस जो आपके फोन को ऑफ कोर्स प्रोटेक्ट करेगा. यू गाइस शुड यूज इट, आई ऑलवेज यूज इट. वारंटी कार्ड, क्विक स्टार्ट गाइड, ये सब भी मिलता है. और अच्छी बात ये है कि आईकू, एटलीस्ट आईकू इज वन ब्रांड जिसने अभी तक अडेप्टर्स और यूएसबी केबल्स पे गिव अप नहीं किया है. सो ऑफ कोर्स यू गेट वन रियली हैवी पावर अडेप्टर. ये है 120 वॉट फास्ट चार्जर. इसको साइड में रखते हैं. इसी के साथ आपको दिखाई देगा USB-C केबल. ओ माय गुडनेस, यहाँ पे एक और चीज भी आपको मिलती है विच इज अ 3.5 mm टू Type-C केबल. ये OnePlus ने देना शुरू किया था और अभी आपको आईकू के साथ भी मिलेगी. बेसिकली दिस मीन्स दैट यूजर्स विल बी एबल टू इजीली यूज देयर वायर्ड हेडफोन्स विद दिस स्मार्टफोन. आई रियली लाइक दिस. तो ये सब चीजें आपको बॉक्स में मिलती हैं. अब बात करेंगे इस स्मार्टफोन की. आइए शुरू करते हैं. सो वी हैव ऑलरेडी अनबॉक्स द डिवाइस. इतना खूबसूरत ये दिखाई दे रहा है. इसके टेक स्पेक्स की भी जल्दी से बात कर लेते हैं. पीछे आपको जो ये कैमरा मॉड्यूल दिख रहे हैं, इसमें आपको मिलेंगे 3 कैमरास. मेन कैमरा इज अ 50 मेगापिक्सल अलॉन्ग विद OIS, सो यू डू गेट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन. राइट साइड पे फ्रेम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर है पावर बटन, साथ में वॉल्यूम रॉकर. लेफ्ट साइड पे आपको काफी ही क्लीन फ्रेम दिखता है. On the bottom you get a SIM tray, Type-C port and speaker. और साथ में अच्छी बात ये है कि जो मेटल फ्रेम है ऑन द साइड इज वेरी गुड. यहाँ पे आपको एंटेना बैंड्स भी दिखाई देते हैं. प्रोसेसर की बात करें, सो व्हाट कीप्स दिस फोन अलाइव इज स्नैपड्रैगन 8 Gen 2. इस साल आपको ज्यादातर फोन्स में यही दिखाई देगा. ग्राफिक कार्ड के लिए ग्राफिक चिप इन्होंने अलग से डाला है विच इज V2. बैटरी इज गोइंग टू बी वन ऑफ इट्स नोटवर्दी फीचर्स क्योंकि इसमें आपको मिलता है 120 वॉट फास्ट चार्जिंग टेक सपोर्ट. वहीं पर जो इसका डिस्प्ले है दैट इज एन एमोलेड डिस्प्ले और साथ में जो इसमें बेजल्स आपको दिखाई देंगे दीज आर वेरी थिन. ये मुझे बहुत पसंद आया. दिस विल इंश्योर स्मूदर व्यूइंग एक्सपीरियंस. तो ये चीज मुझे अच्छी लगी. इस फोन को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और रिव्यू वीडियो आपके सामने जल्द ही लेकर आएंगे. अभी के लिए मजा आ रहा है इस फोन के साथ. लाइट वेट है क्योंकि डिस्पाइट बीइंग अ फ्लैगशिप डिवाइस, तो ये चीजें कुछ अच्छी लगी. बट हो सकता है इसमें कुछ खामियां भी हो. उसके लिए यू रियली नीड टू स्टे ट्यून्ड टू गैजेट टाइम्स क्योंकि हम रिव्यू वीडियो जल्द ही अपलोड करने वाले हैं. So today we have with us is Oppo A78. बॉक्स काफी ही कूल लग रहा है. ब्लू शेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन में ये आता है. अब इसको फटाक से करेंगे अनबॉक्स एंड we'll find out what all contents that you get inside this smartphone retail box. Person, there's only two things that matter. How much am I going to save and how much am I going to have to pay for anything? So in this budget, what has become costlier and what will become more affordable? Let's take a quick look. Cigarettes, practically every budget they are made more expensive has happened yet again. Heat coils, which is good news in this very harsh Delhi winter, have become cheaper. TV parts have also become cheaper. Camera parts have also become cheaper. Clothes, however, have become costlier. Like I said, camera parts, lenses, etc. have become cheaper. Lithium batteries have become cheaper. But if you're planning to have a wedding in the family, that's going to be a bit of a pickle because not just gold and silver, but even diamonds have become more expensive. However, if you want to save a little money on buying jewelry, you can buy some kitchen chimneys, buy things for around your house, doing up your house. Kitchen chimney, also TV parts, all of those have become cheaper. But how has the middle class, how have the people reacted to all of these moves? Let's listen in. We went to the people. The Amrit Kal budget of the Modi government was presented today by Nirmala Sitharaman. Definitely it's a sigh of relief for the middle class when she announced the relaxation of taxation income from 5 lakhs to 7 lakh. But at the same time the middle class are eager to understand because they are the main person who buy the precious metals like gold, silver. But at the same time, Nirmala Sitharaman has also proposed an increase in import duty on both the precious metal, which will have an indirect impact on the middle class when it goes to buy the same. We are present here at one of the shop in Zaveri Bazaar, and let's try and understand
what the industry demanded and what they got and how it will impact the common man. Sir, कुछ मांगे रखी थी आपने इंडस्ट्री के तौर पर, क्या वो मांगे पूरी हुई और उसका इम्पैक्ट क्या नजर आ रहा है? नहीं, हम कई निर्मला सीतारमण जी तीसरा बजट है, हमने गत वर्ष भी इसकी मांग की थी, नीति आयोग से बात की थी और उन्होंने कुछ आश्वासन भी दिए थे कि नहीं हम डेफिनेटली देखेंगे. जो इंपोर्ट ड्यूटी की बात करते हैं, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो कारण जिसकी वजह से सोना बढ़ रहा है वो इंपोर्ट ड्यूटी जो थी कांग्रेस की सरकार में करीबन 1.5 से 2% थी. वो सरकार बढ़ाती गई और आज वो इंपोर्ट ड्यूटी 12.5% के ऊपर चली गई और जिसमें जीएसटी मिलाए, सेस टैक्स मिलाए तो 18.5% हो जाती है. इसकी वजह से बहुत बड़ा हिंदुस्तान में भी स्मगलिंग गोल्ड जो धंधा करते हैं, छोटे छोटे ज्वेलर्स, लोअर क्लास के, मिडिल क्लास के, इस तरह से ज्वेलर्स जो इलीगल सोना से काम करते हैं, उनके सामने जो चेन शोरूम वाले या बड़े शोरूम वाले, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सोना आज 50,000 का भाव है और इंडियन मार्केट में वही सोना आज 60,000 का भाव है. गवर्नमेंट का निर्णय को देखे होंगे कि गेहूं के लिए मार्केट में रिलीज करने के लिए आदेश हुआ है, जिससे गेहूं के दाम कम होने के इतना क्लियर इंडिकेशन है, जिससे सीधा घर में, रसोई में फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा. सो उसको आप बोलना नहीं है. ये नहीं है कि मैं उसके ऊपर कुछ बजट में नहीं बोले, मगर बजट से बोलने से पहले एक्शन ही हो गया है ना, कि घर की रसोई के लिए, गेहूं आटा के लिए मार्केट में रिलीज करने के लिए निर्णय सरकार ऑलरेडी कर चुकी है. एक मिनट. साथ ही साथ जो है महिला जो है वो भी एक परिवार का सदस्य है, तो जो रिलीफ जो इतना टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स में दिया गया है वो भी परिवार के पास में और महिला के पास में आएगा, उसके हाथ में आएगा, जिससे वो अपना घर का खर्चा चला सकती है. सो वो भी एक महिला के लिए, हमें नहीं देखना चाहिए कि महिला के लिए नहीं है, वो भी महिला के लिए एक बेनिफिट है. गेहूं पुरुषों के लिए भी है और महिला के लिए टैक्स भी है. Hi ma'am, Meghna Mittal from ET Now. The fiscal glide path that you have given is 4.5% by 2025-26, which may be considered slightly bold, but does it also indicate your confidence in continuing tax buoyancy in the coming years? Somanathan has already answered it. Yes, tax buoyancy, as you saw even yesterday, GST collection figures have come. Direct taxation buoyancy is also observed in the current year. That is one thing. I think to the credit of this team, there's been a very robust management of macroeconomics. That certainly bears an impact. So all of us might talk about this particular step or that particular step, but I think together, revenue, expenditure, disinvestment, banking, all of us together have worked in such a way that where you can earn more through tax avoidance related measures, and similarly where you can bring in more people into the tax net, you are taking steps. Similarly, prudent ways of effective expenditure without cutting down expenditure, committed expenditure or other expenditure, are all ways in which you're making money mean more, and for every rupee that you spend, you get a better set of returns. So I think efficient management also has a very big role to play here. I just wanted to add to your question. The estimates in the budget, the revenue estimates in the budget, do not assume a buoyancy greater than 1 for the coming financial year. It assumes a buoyancy of 1. Gross taxes are expected to grow by the same 10.5%, by which we have estimated the GDP to grow, which is slightly lower than the figure implied by the economic survey. And therefore, we are assuming only a buoyancy of 1. But if the experience of this year is repeated next year, then it may in fact be more than 1. But we have taken a conservative assumption. And I think the very fact that the commitment to 4.5% was reiterated word by word in this budget
gives you an indication that we feel that we have the means and the ability to reach that target by 2025-26. I would also point out that many of our expenditure increases are on discretionary spends. We have kept a very tight lid on the irreducible types of expenditure, and therefore there is room in the budget, both on the revenue side and on the expenditure side, for us to reach that fiscal deficit target by 2025-26. And it is not lightly that the Finance Minister has reiterated it in Parliament today. Ma'am, Timsi Jaipuria from CNBC TV 18. Ma'am, I have two questions. Firstly, on the TDS reforms, you've come out with two specific reforms. For one, 20% TDS on foreign investments. Why has this been introduced? Is it to curb the flight of capital or investments which was going outside the country? And secondly, on students who are going outside to study, on that also the TDS has come, there's a 5% that has been levied. Or it has been reduced. There is no change on education, or absolutely not. That's wrong. Your facts are wrong. But what happens to the amount that one spends in staying there as a student? First, correct the thing which you said, because yours is a very powerful voice, and that can spread among your dosts, that can go out. No change has been made for education or health purpose, LRS. Please, I hope my voice is audible much more than Timsi's. Thank you for correcting me, ma'am. But on the foreign capital, on the foreign investment, the TDS of 20%, if you could explain the rationale. I think this question was asked, and I already answered it, to say that this is actually coming from income, and the income tax rates for those categories of people who are using this LRS to send money outside is much more than 20%. And so they were in any case, to pay for the tax. And in case they don't have to pay for the tax, they can always get a refund. It is our impression, and there is enough information to indicate that there are quite a lot of people who are able to make these remittances, but whose tax returns are disproportionately low compared to what they send as remittances. Now that means if you don't collect the tax at source, you have to... What's up guys, it's a great day, it's a beautiful day और आप सब Alright, this is not your vlog Akash, this is Gadget Times. I welcome you all. I am Pavni Jain and this is our very special series where we are collaborating with different people on a variety of topics to bring the best for you guys right from the experts. So today we have with us is Akash Malhotra aka Wander with Sky. And he is somebody who creates insane and crazy travel content, goes to offbeat places and also does a lot of off-roading. Off-roading पे मैंने stress इसलिए दिया था क्योंकि ऐसी जगहों पर travel content capture करना becomes a little bit tricky, but this guy, he does it very right. This is why today's video is on how to use an action camera like a pro featuring Akash Malhotra, because it is easier to wander with Sky, but it is not easy to wonder how to use an action camera. Come on guys, right? अच्छा था. Alright, so to begin with, which is your go-to action camera, your most trustworthy device in the most challenging situations? I think बहुत टाइम हो गया यूज़ करते हुए and everyone knows about this about me is that मैं बहुत avid GoPro user हूँ. So GoPro is my game. Oh, alright, as we can see. So we have a lot of GoPros here. So इतने सारे GoPros use कर लिए हैं. तो सबसे important सवाल GoPro को इस्तेमाल कैसे करते हैं भाई? ये please हमारी audience को बताइए. I think ये जो this question which was asked, right? इस्तेमाल कैसे करते हैं?
इसके हर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जवाब है फॉर एवरी के यूज केस. अगर आप कैमरे के अंदर बात करने वाले हैं, यूर अ व्लॉगर, देयर इज अ यूज केस. अगर आप बाइकर हैं, देयर इज अ यूज केस. अगर आप स्कूबा डाइवर हैं, देयर इज अ यूज केस. मतलब कैमरा इज सो वर्सेटाइल इन इटसेल्फ कि आप हर पर्सपेक्टिव में डिफरेंट सिचुएशन में कैमरे को डिफरेंट यूज कर सकते हैं. तो आपको अगर मुझसे थोड़ा डिटेल में सवाल पूछेंगे काश अगर ब्लॉग कैसे करते हैं, तो मैं आपको उस यूज केस में एक अलग सिचुएशन बताऊंगा. मगर मेरे हिसाब से द easiest way to somebody to start a GoPro is just go. मतलब पर्सपेक्टिव्स पे खेलो. कैमरा इतना छोटा है, आप जमीन पे रख सकते हो, आप फेंक सकते हो, कैच खेल सकते हो. मतलब सोच को ब्रॉडन करना जरूरी है. एंड आई थिंक दैट्स वेयर यू स्टार्ट यूजिंग अ GoPro कैमरा. टेक्निकलिटीज आर डिफरेंट व्हिच आई बिलीव हम बात करेंगे, बट द प्लेस टू स्टार्ट इज टू गो क्रेजी. बट यहाँ पर हम जेन्युइनली ये सीखने वाले हैं कि एक्शन कैमरा को यूज कैसे करते हैं. तो खेलना मत, जैसे कि आकाश ने अभी बोला. बेसिक एक्सेसरीज आपको क्या क्या चाहिए? सुपर. सो ये है शॉर्टी. एंड जैसे आपने पूछा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, GoPro की चीज में माउंट करना बहुत क्रिटिकल है. बिकॉज अगर आप उसको हाथ में पकड़ते हैं, मेजरली यू विल एंड अप पुटिंग योर फिंगर समवेयर. क्योंकि इतना वाइड ऑफ एंगल है, मेरे साथ बहुत होता है शुरू में. अगर इवन इफ यू कीप अ फिंगर ओवर हियर, वो दिख जाएगा. तो इट्स बेटर टू माउंट इट इन समथिंग. यूजुअली अगर आप GoPro खरीदते हैं और GoPro का एडवेंचर किट लेते हैं, तो उसमें शॉर्टी आता ही है. So if you should be very smart enough to buy that, so you just mount on a shorty and you shoot yourself while you're talking. GoPro is about perspectives. It's not like a phone. तो अगर आपका हाथ दिख रहा है तो cool लगता है. So you need to really, get your mind working like that कि हाँ ये cool है. So this is important to have something to hold GoPro. Also it gives you a place where you can keep it. अगर आपको चलते हुए शॉट लेना है. See, GoPro के साथ सबसे important बात ये है कि you have to understand कि कैमरा इज एन एक्सटेंशन ऑफ योरसेल्फ. अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे खेल पाएंगे. सो दैट्स वेयर यू स्टार्ट यूजिंग अ GoPro. एंड आई डोंट थिंक एज अ स्टार्टर यू नीड एनीथिंग मोर देन अ कैमरा एंड अ शॉर्टी. Would you want to tell something to our viewers about the memory? Because इसमें normal, simple micro SD card use नहीं कर सकते हैं. Which one is it? So the GoPro is capable of shooting. The Hero 10 is capable of shooting 120 FPS at 4K. Okay. ठीक है. अब सिचुएशन क्या है कि अगर आप 120 फ्रेम्स कर रहे हैं तो यू नीड अ मेमोरी कार्ड व्हिच कैन राइट एट दैट स्पीड. बहुत सारा डेटा है. एंड आप 5K भी शूट कर रहे हैं एट 60 FPS. दैट्स अ लॉट ऑफ डेटा. सो लाइक वी सेड, बेसिक सेटअप में आपको चाहिए बैटरी, मेमोरी कार्ड, कैमरा itself and also shorty like आकाश mentioned. ये सब आपको more or less किट में मिल जाएगा. आकाश की फेवरेट मेमोरी कार्ड नहीं मिलेगा किट में. Oh, okay. That is an important information, guys. That is very important. So 35,000 crores. Direct taxes 37,000 crore. Indirect taxes 1,000 crore. Additional revenue through indirect taxation measures 3,000 crores. And so net is 35,000 crore. This is Anuradha from Economic Times. In your budget speech, ma'am, you spoke about the review of financial sector regulators. So can you elaborate a little bit more on that? Something? Some of these exercises, when the regulations are brought in, they serve a purpose. Thereafter, the economy changes. So all the regulators have been doing it as part of their exercise. But there's a time now to take up a comprehensive review. And you will recall, RBI had formed a committee. They did it in 2020. They came out with a report in 2021. That is an ongoing process, and other regulators also will travel in that direction, that their regulations are what the economy needs today. Whatever tweaking is required, they will take up that steps. There's their own review, not by them. सो गाइस, आज हम हैं यहाँ पे विद गैलेक्सी A14 5G एंड ये सैमसंग का नया बजट स्मार्टफोन है. लेट्स सी, इसको अनबॉक्स करते हैं. जैसे कि देख सकते हैं, इस डब्बे में एक फ़ोन है और नथिंग नीचे ऊपर. सिम इजेक्टर टूल,
एंड अंदर इसके आई थिंक चार्जिंग केबल होना चाहिए. Yep. हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव में। मैं हूं अंकुर तनेजा। बगल में मेरी खड़ी है लेक्सस की RX, जो यहाँ ऑटो एक्सपो 2023 में यहाँ पर अनवील करी गई है। दो वर्जन है, 350H और 500H। 500H यहाँ पर खड़ा हुआ आप देख सकते हैं हमारे सामने है, एंड द कार लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग, स्पेशली इन दिस कलर। एंड यहाँ पर देखेंगे ये F स्पोर्ट की बैजिंग लगी हुई है, तो 500H में जो है वो F स्पोर्ट वाला वर्जन आता है, 350H में F स्पोर्ट नहीं आता है। डिजाइन की बात करें तो गाड़ी रोटेट हो रही है, थोड़ा जैसे गाड़ी रोटेट हो रही है वैसे मैं डिजाइन की बात कर लेता हूं। सो ओवरऑल देखिए, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन प्रॉपर SUV वाला फील इसके साइज से आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे क्लैडिंग थ्रू आउट दी गई है, पियानो ब्लैक में इसकी क्लैडिंग दी गई है, सो प्रीमियमनेस यहाँ पर झलक करते हुए सामने आ रही है। एंड ओवरऑल टायर्स का जो अलॉय व्हील्स हैं वो भी सिंगल टोन में ब्लैक में यहाँ देखने को इधर मिल रहे हैं। फिर आऊँ पीछे की तरफ, तो यहाँ पर थोड़ा वो कूपे वाला फील आता हुआ आपको देखने को मिलेगा। एंड पीछे की तरफ कनेक्टेड टेल लाइट यहाँ दी गई है, लेक्सस की ब्रांडिंग, RX 500H की ब्रांडिंग यहाँ डायरेक्ट फॉर दिया गया है। एंड ये ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी साथ लेक्सस कह रही है, ये गाड़ी को प्रोवाइड कर रही है। एंड नीचे भी ओवरऑल जो बॉडी कलर है उसी को मैच करते हुए इसका बम्पर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो डोर जो है उसमें एक छोटा स्विच दिया गया है, जिसको हल्का सा आप टच करेंगे तो ऑटोमेटिकली डोर्स सेंस कर लेंगे और वो खुल जाएंगे। फुल करने की जरूरत नहीं है। अंदर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो मामला है, शाही साथ ही साथ स्पोर्टी झलक कर पूरा आ रहा है। ये बड़ा सा स्क्रीन यहाँ पे दिया गया है सेंटर में। गाड़ी फिलहाल अभी ऑन नहीं है, बट साइज देख के आप समझ जाएंगे मामला काफी शाही और काफी टेक फ्रेंडली यहाँ पर होने वाला है। पावर बटन यहाँ पे दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी फुल डिजिटल देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में जो है सिस्टम को कंट्रोल करने के बटन, राइट साइड में क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट वाला सब फीचर्स यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहे हैं। स्पेस की बात करूँ, USB-C चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है, एंड कुछ सामान रखने की और जगह यहाँ पर देखने को मिल रही है। कप होल्डर्स हैं, यहाँ पर 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। एंड ओवरऑल जो इंटीरियर है, सेंटर कंसोल और सीट की बात करूँ तो लेदर स्टिच यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा वेलवेट टच भी इसकी सीट में दिया गया है, तो कमी किसी तरह से भी गाड़ी को प्रीमियम बनाने में लेक्सस ने इस RX में नहीं करी है। इसके अलावा स्टीयरिंग फ्लैट बॉटम है, स्पोर्ट की बैजिंग यहाँ देखने को मिल रही है। एंड डोर्स में भी सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल करा गया है, यहाँ पे देखेंगे। एंड लेदर स्टिच यहाँ पे सेम वुड टोन में, रेड टोन में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी इसमें HUD डिस्प्ले दिया गया है। एंड डैशबोर्ड का ओवरऑल फील जो है वो भी सॉफ्ट टच वाला ही देखने को मिल रहा है इस लेक्सस की फ्रंट रो में 500H की। इसके अलावा पीछे मामला कितना शाही है, हालांकि स्पोर्टी ओवरऑल सीट्स का डिजाइन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। एंड स्पोर्ट की बैजिंग हेडरेस्ट में भी यहाँ पे दी गई है। पीछे चलते हैं, वहां मामला कैसा है एक बार उसको देखते हैं। साउंड सिस्टम की बात करूं तो मार्क्स एंड लेवेंसन का सिस्टम, इस साउंड सिस्टम इसमें दिया गया है। एंड रियर सीट भी आप देखेंगे वही सेम रेड टोन में, ब्लैक और रेड का इस्तेमाल थ्रू आउट द कैबिन यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड वो स्पोर्ट जो स्पोर्टी फील है वो यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट्स के मिलने के बाद बनती हुई आपको दिखाई देगी। पीछे भी 100 सीट्स दी गई हैं। एंड यहाँ पर USB-C चार्जिंग पोर्ट हैं, 2 AC वेंट्स दिए गए हैं। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे एक ये आर्मरेस्ट भी देखने को मिल रहा है। यस, कुछ ऐसे खुलता है। 2 कप होल्डर्स हैं एंड कुछ सामान रखने की जगह यहाँ पे भी देखने को इधर मिल रही है इस लेक्सस की RX 500H में। एंड ऑफ कोर्स ये पैनोरामिक सनरूफ वाला मामला भी यहाँ पर इसमें देखने को
मिल रहा है। तो मामला शाही स्पोर्टी से भरा हुआ है। कहीं भी किसी तरह से मुझे नहीं लग रहा कि गाड़ी में स्पोर्टी एलिमेंट्स की कमी है एंड ऑल्सो वो प्रीमियम फील Not lead to any incremental crowding out. In fact, as a percentage of the size of the nominal economy, the total gross borrowing is actually going to be lower in 23-24 than in 22-23. So incremental crowding out, I think, is not a significant issue, and that I do not think will lead to any impact on borrowing costs in the private sector. This is reiterating that point that expect the required borrowings for the next year are of the same order what they are in the current year. Of course, the size of the economy has gone up. So it is not that the more money is being taken out of the savings which are available into the economy. So we don't see that impacting because it is of the same order. And even if you go 2 years back and just increase by nominal rates, the borrowings are, net borrowings are of the same order. In fact, they are less than 2% more than the actuals. The figures stated were, I think, for the BE, but actually it will be only, estimates are that it will be less than 2%. Economy is nominally expected to grow at more than 10.5%. So, I mean, that should answer your question. iQOO 11 हो गया इंडिया में लॉन्च एंड विदाउट वेस्टिंग एनीबॉडीज टाइम इट्स टाइम टू अनबॉक्स दिस डिवाइस. बट बिफोर आई डू दैट अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. हाई यू वॉचिंग गैजेट टाइम्स, दिस इज मी पावनी जैन और अब करेंगे इस बॉक्स को अनबॉक्स. एंड नाउ इट्स टाइम टू अनबॉक्स दिस हेवी रिटेल बॉक्स. इससे आपको पता चलेगा कि iQOO 11 के रिटेल बॉक्स में व्हाट ऑल कंटेंट्स डू यू गेट इनसाइड. लेट्स बिगिन. सबसे पहले आपको दिखाई देगा स्मार्टफोन जिसके लिए हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट ऑफ कोर्स यू एक्सपेक्ट इनसाइड द रिटेल बॉक्स. इसको निकालते हैं रैपर से जल्दी से. काफी ही बढ़िया कलर ऑप्शन, एकदम एग्जैक्ट प्योर वाइट. इस कलर ऑप्शन का नाम है लेजेंड जो कंपनी ने दिया है. पंच होल कैमरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑन द डिस्प्ले. पर बात तो करेंगे रेयर पैनल की. यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये रेसिंग स्ट्राइप. फॉर दिस पर्टिकुलर डिवाइस iQOO हैज पार्टनर्ड विद BMW M Sport. तो यहाँ पे आपको वो रेसिंग स्ट्राइप्स दिख रहे हैं. काफी वाइब्रेंट कलर्स हैं, रेड, ब्लैक एंड ब्लू, जहाँ पर iQOO की ब्रांडिंग भी है. कैमरा मॉड्यूल इज रियली वेरी बिग, रेक्टेंगुलर है जिसमें 3 कैमरास आपको दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पर V2 की भी ब्रांडिंग है क्योंकि कंपनी ने इस स्मार्टफोन में दिया है V2 ग्राफिक चिप. इसी के साथ कैमरास की बात करें तो जो इसका मेन कैमरा है दैट इज अ 50 मेगापिक्सल. एंड इफ यू गाइस कैन लुक एट द कैमरा मॉड्यूल, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है और इसकी फील तो बहुत ही बढ़िया है. वाइट है और थोड़ा टेक्सचर्ड है, देखने में काफी सुंदर. और मैंने काफी स्मजेस भी डाल दिए हैं ऑन द डिस्प्ले. इसको स्टार्ट करते हैं, साइड में रखते हैं और फिर देखेंगे बाकी के कंटेंट्स. बॉक्स के अंदर आपको ये सब दिखेगा. सिम इजेक्टर टूल, इसके अलावा ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव केस जो आपके फोन को ऑफ कोर्स प्रोटेक्ट करेगा. यू गाइस शुड यूज इट, आई ऑलवेज यूज इट. वारंटी कार्ड, क्विक स्टार्ट गाइड, ये सब भी मिलता है. और अच्छी बात ये है कि iQOO, एटलीस्ट iQOO इज वन ब्रांड जिसने अभी तक अडेप्टर्स और USB केबल्स पे गिव अप नहीं किया है. सो ऑफ कोर्स यू गेट वन रियली हैवी पावर अडेप्टर. ये है 120 वॉट फास्ट चार्जर. इसको साइड में रखते हैं. इसी के साथ आपको दिखाई देगा USB-C केबल. ओ माय गुडनेस, यहाँ पे एक और चीज भी आपको मिलती है which is a 3.5 mm to Type C cable. ये OnePlus ने देना शुरू किया था और अभी आपको iQOO के साथ भी मिलेगी. Basically, this means that users will be able to easily use their wired headphones with this smartphone. I really like this. तो ये सब चीजें आपको बॉक्स में मिलती हैं. Ta-da!
अब बात करेंगे इस स्मार्टफोन की, आइए शुरू करते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी अनबॉक्स द डिवाइस, इतना खूबसूरत ये दिखाई दे रहा है। इसके टेक स्पेक्स की भी जल्दी से बात कर लेते हैं। पीछे आपको जो ये कैमरा मॉड्यूल दिख रहे हैं, इसमें आपको मिलेंगे 3 कैमराज। मेन कैमरा इज अ 50 मेगापिक्सल अलॉन्ग विद OIS, सो यू डू गेट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। राइट साइड पे फ्रेम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर है पावर बटन, साथ में वॉल्यूम रॉकर। लेफ्ट साइड पे आपको काफी ही क्लीन फ्रेम दिखता है। On the bottom you get a SIM tray, Type C port and speaker, और साथ में अच्छी बात ये है कि जो मेटल फ्रेम है ऑन द साइड इज वेरी गुड। यहाँ पे आपको एंटेना बैंड्स भी दिखाई देते हैं। प्रोसेसर की बात करें, सो व्हाट कीप्स दिस फोन अलाइव इज स्नैपड्रैगन 8 Gen 2। इस साल आपको ज्यादातर फोन्स में यही दिखाई देगा। ग्राफिक कार्ड के लिए ग्राफिक चिप इन्होंने अलग से डाला है विच इज V2। बैटरी इज गोइंग टू बी वन ऑफ इट्स नोटवर्दी फीचर्स, क्योंकि इसमें आपको मिलता है 120 वॉट फास्ट चार्जिंग टेक सपोर्ट। वहीं पर जो इसका डिस्प्ले है दैट इज एन एमोलेड डिस्प्ले, और साथ में जो इसमें बेजल्स आपको दिखाई देंगे दीज आर वेरी थिन। ये मुझे बहुत पसंद आया। दिस विल इंश्योर स्मूदर व्यूइंग एक्सपीरियंस, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। इस फोन को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और रिव्यू वीडियो आपके सामने जल्द ही लेकर आएंगे। अभी के लिए मजा आ रहा है इस फोन के साथ। लाइट वेट है क्योंकि डिस्पाइट बीइंग अ फ्लैगशिप डिवाइस, तो ये चीजें कुछ अच्छी लगी, बट हो सकता है इसमें कुछ खामियां भी हो। उसके लिए यू रियली नीड टू स्टे ट्यून्ड। Good evening, hello and welcome. You're watching Times Now. This is by far the biggest and the most comprehensive budget coverage all throughout the day. Let's quickly get you started with the top 50 updates we are tracking this hour. Finance Minister Nirmala Sitharaman presents Union Budget 2023, the last full budget of the Modi 2.0 government. Focuses on 7 areas: inclusive development, reaching the last mile, infrastructure investment, unleashing the potential, green growth, youth, power and financial sector. Government says the first budget in the Amrit Kal hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. Mega announcement on increasing the income level up to which no income tax is payable. Now there will be no income tax up to rupees 7 lakh from the 23-24 financial year. Income above 3 lakh and up to 5 lakh will be taxed at 5%. Income above 6 lakh and up to 9 lakh will be taxed at 10% under the new regime. Income more than 12 lakh and up to 15 lakh to be taxed at 20%, while income above 15 lakh to be taxed at 30%. Government announces slew of tax relief to cooperative sector. Budget outlay at 1,150.38 crore for cooperative ministry. Revamped credit guarantee scheme for MSMEs to take effect from 1st April 2023 through infusion of 9,000 crore in the coppers. The scheme would enable additional collateral-free guaranteed credit of 2 lakh crore and also reduce the cost of credit by about 1%. Indian Railways receives a major boost from the Union Budget. Railways to get a capital outlay of 2.4 lakh crore, the highest ever till date. Mobile phones, TV sets manufactured in India to now be cheaper. Denatured ethyl alcohol, acid grade fluorspar, shrimp feed, lab grown diamonds, fish lipid oil used in manufacturing aquatic feed, machinery for manufacturing lithium ion cell to be used in electric vehicles, raw materials for manufacture of CRGO steel, ferrous scrap and nickel will also be cheaper. Items that will be dearer includes fully imported cars including electric vehicles, kitchen chimney, imported bicycles, toys, articles made of gold, platinum, imitation jewelry. Prime Minister Modi hails the budget and says it is for Samruddh, Sampann, Samarth Bharat for 2047. He says it infuses new energy to India's development trajectory, is for all aspirational classes including the poor, middle class and farmers. Budget shows clear focus on encouraging research and development by the pharmaceuticals industry. Total allocation for health in the budget at 2.1% of the GDP. 157 new nursing colleges will be established in co-location with the existing medical colleges. ICMR's lab will also be increased further. A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 launched by the government. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas.
Finance Minister Nirmala Sitharaman said that a new program will be prepared for research in pharma and encouragement will be given to research. Allocation to defence budget increases to 5.94 lakh crores for 2023-24 from last year's allocation of 5.25 lakh crore. Equity benchmarks, Sensex and the Nifty paired gains today and market volatility. In the afternoon trade, the Sensex rose 1,000 points to touch an intraday high of 60,1618 points. The broader NSE Nifty had climbed 270 points or 0.78% to 17,933 points. As per the Finance Ministry, the KYC process will be simplified by adopting a risk-based approach rather than one-size-fits-all approach. The average processing time for income tax returns will be reduced to 16 days from 93 days. The government also intends to roll out the new generated ITR forms and strengthen the grievance redressal mechanism. Tax deducted on EPF withdrawals has been reduced to 20% from 30% in non-PAN cases in Budget 2023. The reduction will help individuals whose PAN is not updated in records in EPFO. For women, a one-time small savings scheme, the Mahila Samman Savings Certificate has been announced. It will be available for 2 years. The interest rate has been fixed at 7.5% per annum. Centre pegs the fiscal deficit for 2022-23 at 5.9% of the GDP for financial year 24. Sitharaman also reiterates Centre's commitment to bring fiscal deficit down to 4.5% of the GDP by financial year 2026. 11% hike in agriculture credit target to rupees 20 lakh crore for the next fiscal year with focus on animal husbandry, dairy and fisheries. Government plans to set up a digital public infrastructure for agriculture as an open source, open standard and interoperable public good. To make India a global hub for Sri Anna, Indian Institute of Millet Research, Hyderabad will be supported as Centre of Excellence for sharing best practices at global level. The government will set a massive decentralized storage capacity to help farmers among other announcements. To enhance the focus on animal husbandry and fisheries, the government will invest 6,000 crore to further enable activities for fishermen, fish activities and expand the market. 1.1 lakh crore allocated for expenditure on education in the budget. This is the highest allocated fund granted to the ministry ever. The National Digital Library for Children and Adolescents will be established to make high-quality literature more accessible. India will also set up 3 centers of excellence for artificial intelligence at top educational institutions to develop cutting-edge AI solutions in the country. 35,000 crore announced for priority capital investment towards energy transition and net zero objectives and energy security by the Ministry of Petroleum and Natural Gas. Meanwhile, the opposition has attacked the government and called the budget anti-people. PDP chief Mehbooba Mufti has alleged that budget presented by centre is not pro-people and was made keeping interest of a few businessmen in mind. Delhi Chief Minister and AAP Chief Kejriwal has hit out at the Modi government over the budget, alleging there is no relief for the Aam Aadmi. Congress's Shashi Tharoor flagged that there was no mention of the rural poor, unemployment and inflation, says fundamental questions still unanswered. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has claimed that the budget will deprive the poor and branded the budget anti-people and opportunistic. Congress leader K. Suresh called the budget a pro-corporate budget that was only in interest of Adani, Ambani in Gujarat, claims the common man has been ignored. The Bahujan Samaj Party Supremo Mayawati has said it would be better if the budget is for the country rather than for the party. Opposition leaders including BSP's Maluk Nagar has said that relief granted to common people in the union budget has made it a hit like Shah Rukh Khan's starter Pathan. However, National Conference Chief Farooq Abdullah lauded Centre's budget and said that big relief has been given to middle class by the government. Congress's Karti Chidambaram also hailed Budget 23 and said that the tax cuts announced by the government is a welcome move. In other big news stories of the day, a special court in Mumbai granted bail to Kundan Shinde and aid of former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh in a money laundering case. PDP Chief Mehbooba Mufti slams the ongoing anti-encroachment drive in Jammu and Kashmir, calling it a new weapon of the BJP to persecute people of Jammu and Kashmir. BJP leader Nitish Rane crossed all limits while criticizing Shiv Sena Chief Uddhav Thackeray.
Army Chief General Manoj Pandey presided over the 29th Foundation Day celebration of the Army Institute of Technology in Pune. A massive avalanche hit the upper reaches of a ski resort in Gulmarg, leaving 2 people dead. 2 Polish nationals died in the avalanche that hit Gulmarg. They were among the 21 foreign nationals and 2 local guides at the ski slopes when the avalanche came rolling down. A video has gone viral showing a moving Maruti Wagoner on fire near the Thane Mulund checkpost in Mumbai. The car was completely charred, but all passengers managed to escape in time. In UP's Pilibhit, tourists filmed the narrow escape of a peacock from a tiger's attack. In this video, a tiger can be seen approaching his prey, but the peacock gives the tiger a slip and flies away. 4 people killed in flooding in Auckland in New Zealand after heavy torrential rains. Pope Francis urges Congo's people to forgive those who have harmed them. Pope was presiding over a mass before an estimated 1 million people. One of the most awaited announcements in the budget is about personal income tax, and in the budget for Amrit Kal, the middle class has finally got some succor. Mega incentives have been announced under the new tax regime. The rebate limit for individual taxpayers had been increased from 5 lakh to 7 lakh. The number of tax slabs in the new tax regime has also come down, and the tax exemption limit has been increased to 3 lakh. The country's topmost tax bracket has also been brought down from 42.74% to 39%. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any tax, do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the... I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. In simple words, viewers, this will result in giving more consumption power to the middle class income group, as they could spend the entire amount of money without bothering too much about investment schemes to take the benefit of exemptions, bringing some much needed relief to the middle class. साथियों, बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। Let's open this up. Harsh Shetty is now joining us. Harsh Satya, I beg your pardon. Harsh, thank you for joining us. Could you just break this down? What does the tax relief actually mean for the common man? Well, yes, let me break this down into 3 parts. First, very correctly already summarized by the finance minister, but let me break it down further. Basically, up till now, incomes up to 5 lakh rupees effectively paid no taxes. Now that has been increased to 7 lakh rupees. So typically, if you are an income earner of around 5 to 7 lakh rupees, you will roughly save around 33,000 rupees of tax in the next financial year, which is FY24. This, of course, brings in more money into the economy, into the system. Second,
The tax slabs have been changed even after that. So we are seeing a change in the tax slabs across all income brackets. What does this mean? If you are an earner between 7 to 9 lakh of rupees, then you will save roughly 15 to 16,000 rupees of tax in FY24. Moving on, if you are a 9 to 12 lakh rupee earner, then you will save roughly 25,000 rupees in FY24. And if you earn anything between 12 to 15 lakh rupees, then you will save roughly 39,000 rupees every year or for the year of FY24, which is really handsome. So that's a good positive coming through. But moving on, the other change that's happened is for ultra HNIs, or rather the people earning more than 5 crore every year. For them, the tax bracket, which was effectively 42.5%+, has been brought down to 39% by a reduction in surcharge. Earlier, there was a surcharge of 37% on their income tax. Now that has been brought down to 25%. These are the three key changes which are currently impacting not only the middle class but also the topmost end of the income bracket. Okay, Harsh, thanks for breaking it down. Please stay on with us. Anuj Bali, tax expert, is also with us. Good evening, Mr. Bali. Now, straight question, who is the greatest beneficiary of this budget? Oh, very honestly, if though it sounds a little complicated to, look at the tax slabs, trying to derive a meaning out of it, but if you really look at it, I feel the middle class and even, the lower middle class, I think all of them are going to benefit a lot from this, because if you try to decode the change in the slab rate, what you'll understand is that they're saying that anybody who's earning up to 7 lakhs, we don't want any tax from you. Anybody who's earning, say, about 12 lakhs, 15 lakhs, we want a tax from you, but we're going to give you some relief, right? By changing the tax slab rates, they've, overall effectively change your overall tax burden if you are earning, say, about 12 to 15 or 20 lakhs, by giving you a change in the tax slab rate, by giving you a tax rebate up to 7 lakhs. What they're saying is that we don't want to tax you till about 7 lakhs of your income. So I feel it's a win-win for both. And also, like if you even see people who are earning more than 5 crores as a total income, they've given a relief on the surcharge also, wherein your effective tax has also been brought down there. So I would say, for all the classes, all the three classes, I would look at this budget to be very beneficial. So you are saying that this is a sabka budget, benefits all sections of society, but how would you respond to those who are saying that this is only tokenism for the middle class, there is nothing in it really? Well, if you really look at the government, I don't want to sort of market any government, but I really support them because, if you look at the past 10 years, since the time they came in power, they reduced the overall corporate tax rate from a 30% to a 25% for a company. That's a relief that businesses and companies got initially. And now, over a period of time, the Aam Aadmi has also started getting some relief. Of course, if you get about exemption till about 20 lakhs of your income, everybody is going to be happy. But if you look at policymakers also, they also have to balance it overall to strike a balance between the overall tax collections, because there's a lot of spend on capital goods and the roads and infrastructure that is going to go over the next 5 years. Let's hear from our viewers, Mr. Bali, and let's see if you can answer their queries and questions. PK Jain is now joining us from Kota. Sir, good evening. You're on Times Now. Hello. Yes, sir. We can hear you. Go ahead. But is there any relief for senior citizens in this new tax regime? There is, sir. There is, and Anuj Bali will elaborate on that. What's the big relief for the senior citizens, Mr. Bali? Oh yes, if you look at the overall contribution for the senior citizens, which has been increased to 30 lakhs, I think that's one of the greatest reliefs that has been provided by the government. Okay, I hope that answers your query. SP Singh is now joining us. Sir, good evening. You're calling us from Chennai. Go ahead. My question is that earlier in the old and new regime, the limit of 5 lakh rupees was equally applicable. But now I presume that it is applicable only on the 7 lakh limit is applicable only on
the new tax regime, not on the old. Old, perhaps it is 5 lakh only. Am I correct? You're spot on, sir. You're spot on. Decode, the 5 and the 7 lakh thing, that if you were in the old regime, you would have, had an income of 7 lakhs and then you would have done an ATC investment and stuff, which would have brought down your income, taxable income to 5 lakhs. So effectively, if you see that if you're at a 7 lakhs of income, and if you don't want to do an ATC investment, then you don't have to pay any tax. Okay. Thank you, Mr. Singh, for joining us. Rajam is on the line from Chennai. Sir, good evening. Mr. Rajam, if you can hear me. Okay. Mr. Inderpal now joining us. Sir, good evening. You're on Times Now. Go ahead. Ask your question. Good evening. Previously, there was a 50,000 income from interest was exempted for senior citizens. What's the position now? Well, what I have gone through till now in the memorandum, it requires a deeper analysis, but there seems to be no change there. Okay, so there is no change. Harsh, do you want to add something to what Mr. Bali has said on that question? No, nothing at the moment. It doesn't seem like there is a change there either from my side. Okay, there is no change. Thank you, Mr. Inderpal, for joining us and sharing your query with us. More reactions coming in. Mr. P. Chidambaram has reacted to the budget. He says, budget and budget speech of Finance Minister show how far this government is removed from the people and their concerns about life, livelihood and the growing inequality between rich and poor. And this brings me to the question that I asked you, Mr. Bali, that many people are saying, you said that this is a sabka budget, benefits all sections, but look at what the opposition leaders are saying. So, if I look at the political angle, so I'm not a political expert, but from a tax perspective, I would just say that, the lower middle class, the middle class and the rich class, all of them have been looked after well. And, especially people who are earning about 7 to 10 lakhs, it's the greatest, I think, beneficial budget for them, I would say. Okay, let's quickly play out what Mr. Chidambaram said. And the budget speech of the Honorable Finance Minister show how far this government is removed from the people and their concerns about life, livelihood, and the growing inequality between the rich and the poor. Let me begin by pointing out with regret that the FM has not mentioned the words unemployment, poverty, inequality, or equity anywhere in her speech. Mercifully, she has mentioned the word poor twice in her speech. I'm sure the people of India will take note of who are in the concerns of the government and who are not. We have more viewers joining us with their queries, Mr. Bali, but I have a question and I'm going by reactions. If you think social media is any measure of public sentiment in today's day and time, people are actually confused about the new tax slab, the changes in it. Oh yes, I actually do not blame them, right? Because this old scheme and the new scheme thing has just recently been brought into the tax structure. And, people, I feel, are still not able to understand the difference between the new and the old thing. And, even if you look at the internet, you'll find various versions of the old and the new scheme. If you don't read the memorandum properly, you'll not even be able to understand what the difference is today. But if you really try to understand from a common man perspective, I would like to explain it in a manner that if you earn up to 7 lakhs, whether you are in the old or the new regime does not matter. You don't have to pay taxes till about 7 lakhs. That's the crux of it. And if you are earning about 10 lakhs, 20 lakhs, you still get about 33 to 50,000 of tax cut overall. So that's like the crux. Okay, we have more viewers on the line waiting for their query to be answered. Mr. Radhakrishnan is joining us from Bengaluru. Sir, good evening. Yes, sir. Hello. Good evening, sir. Welcome to Times Now. We can hear you. Go ahead, sir. Sir, I have one question. Sir, see, the new tax regime up to 7 lakh is not taxable.
So beyond the 7 lakhs is taxable. But whereas in the new tax regime, tax slabs are setting up to 0 to 3 lakhs nil. 3 to 6 lakhs it is 5%. 6 lakhs 9%, 10% it is saying. What do you mean, sir, that? See, if you that's the thing, right? If you try to understand, it looks like you have to pay taxes from 3 to 6 lakhs. But the meaning of this is that up to 7 lakhs, whether you're in the old or the new regime, you do not have to pay any taxes. So if you're earning up to 7 lakhs, you need not even go to the old regime. It's as simple as that. Why they have put these slabs is they are not targeting people who are earning up to 7 lakhs. The people they are wanting to target is people who are earning 9 lakhs, 12 lakhs, because if you look at their overall tax, it comes down in the old regime. So till about 7 lakhs, you can be absolutely free and tension free that you don't have to pay any taxes. Okay. Ramesh is joining us from Hyderabad. Sir, good evening. You're on Times Now. Hello. Yes, sir. Good evening. Hello. Sir, I want to ask you two things. One is, suppose if somebody opted for the old regime, can he move to new regime at any time or you have to wait, or what is the procedure? Second thing is this 7 lakh thing. I think I understand 7 lakhs. I understand if it is something exceeding 7 lakhs, you have to pay from 3 lakhs range, 6 to 9 lakhs range, and then whatever the difference between 7 and plus whatever you are earning, or okay, let's have that answer quickly. Yes, Mr. Bali. Oh yes, so subject to certain conditions which are not very complex, you have the right to shift to any regime at any point of time. Okay, thank you, Mr. Bali, for joining us. Thank you to all our viewers who called in and asked their questions. We continue our non-stop coverage. Budget remains our focus. A quick break on Times Now. What's up, guys? It's a great day. It's a beautiful day. और आप सब all right, this is not your vlog, Akash. This is Gadget Times. I welcome you all. I am Pavni Jain, and this is our very special series where we are collaborating with different people on a variety of topics to bring the best for you guys, right from the experts. So today we have with us is Akash Malhotra, aka Wander with Sky. And he is somebody who creates insane and crazy travel content, goes to offbeat places and also does a lot of off-roading. ऑफ-रोडिंग पे मैंने स्ट्रेस इसलिए दिया था क्योंकि ऐसी जगहों पर ट्रैवल कंटेंट कैप्चर करना becomes a little bit tricky, but this guy, he does it very right. This is why today's video is on how to use an action camera like a pro, featuring Akash Malhotra, because it is easier to wander with Sky, but it is not easy to wonder how to use an action camera. Come on, guys, right? अच्छा था. All right, so to begin with, which is your go-to action camera, your most trustworthy device in the most challenging situations? I think बहुत टाइम हो गया यूज करते हुए, and everyone knows about this about me is that मैं बहुत avid GoPro user हूँ. So GoPro is my game. Oh, all right, as we can see. Yeah, so we have lot of GoPros here. So इतने सारे GoPros यूज कर लिए हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल GoPro को इस्तेमाल कैसे करते हैं भाई, ये प्लीज हमारी ऑडियंस को बताइए. ये I think ये जो this question which was asked, right, इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसके हर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जवाब है. फॉर एवरी के यूज केस, अगर आप कैमरे के अंदर बात करने वाले हैं, यूर अ व्लॉगर, देयर इज अ यूज केस. अगर आप बाइकर हैं, देयर इज अ यूज केस. अगर आप स्कूबा डाइवर हैं, देयर इज अ यूज केस. मतलब कैमरा इज सो वर्सेटाइल इन इटसेल्फ कि आप हर पर्सपेक्टिव में डिफरेंट सिचुएशन में कैमरे को डिफरेंट यूज कर सकते हैं. तो आपको अगर मुझसे थोड़ा डिटेल में सवाल पूछेंगे काश अगर ब्लॉग कैसे करते हैं, तो मैं आपको उस यूज केस में एक अलग सिचुएशन बताऊंगा. मगर मेरे हिसाब से द इजीएस्ट वे टू समबडी फॉर समबडी टू स्टार्ट अ GoPro is
जस्ट गो, मतलब पर्सपेक्टिव्स पे खेलो। Okay. कैमरा इतना छोटा है, आप जमीन पे रख सकते हो, आप फेंक सकते हो, कैच खेल सकते हो, मतलब सोच को ब्रॉडन करना जरूरी है। एंड आई थिंक दैट्स वेयर यू स्टार्ट यूजिंग अ गोप्रो कैमरा। टेक्निकलिटीज आर डिफरेंट व्हिच आई बिलीव हम बात करेंगे, बट द प्लेस टू स्टार्ट इज टू गो क्रेजी। बट यहाँ पर हम जेन्युइनली ये सीखने वाले हैं कि एक्शन कैमरा को यूज कैसे करते हैं। तो खेलना मत, जैसे कि आकाश ने अभी बोला। बेसिक एक्सेसरीज आपको क्या क्या चाहिए? सुपर। सो ये है शॉर्टी एंड जैसे आपने पूछा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गोप्रो की चीज में माउंट करना बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज अगर आप उसको हाथ में पकड़ते हैं मेजरली यू विल एंड अप पुटिंग योर फिंगर समवेयर, क्योंकि इतना वाइड ऑफ एंगल है। मेरे साथ बहुत होता है शुरू में, अगर इवन इफ यू कीप अ फिंगर ओवर हियर वो दिख जाएगा। तो इट्स बेटर टू माउंट इट इन समथिंग। यूजुअली अगर आप गोप्रो खरीदते हैं और गोप्रो का एडवेंचर किट लेते हैं तो उसमें शॉर्टी आता ही है। So if you should be very smart enough to buy that, so you just mount on a shorty and you shoot yourself while you're talking. GoPro is about perspectives. It's not like a phone. तो अगर आपका हाथ दिख रहा है तो cool लगता है. So you need to really, get your mind working like that कि हाँ ये cool है. So this is important to have something to hold GoPro. Also it gives you a place where you can keep it. अगर आपको चलते हुए शॉट लेना है, see GoPro के साथ सबसे important बात ये है कि you have to understand कि कैमरा इज एन एक्सटेंशन ऑफ योरसेल्फ। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे खेल पाएंगे। सो दैट्स वेयर यू स्टार्ट यूजिंग अ GoPro, एंड आई डोंट थिंक एज अ स्टार्टर यू नीड एनीथिंग मोर देन अ कैमरा एंड अ शॉटी। Would you want to tell something to our viewers about the memory? Because इसमें normal, simple micro SD card use नहीं कर सकते हैं. Which one is it? So the GoPro is capable of shooting. The Hero 10 is capable of shooting 120 FPS at 4K. Okay. ठीक है। अब सिचुएशन क्या है कि अगर आप 120 फ्रेम्स कर रहे हो तो यू नीड अ मेमोरी कार्ड व्हिच कैन राइट एट दैट स्पीड। बहुत सारा डेटा है, एंड आप 5K भी शूट कर रहे हैं एट 60 FPS। दैट्स अ लॉट ऑफ डेटा। So like we said, basic setup में आपको चाहिए बैटरी, मेमोरी कार्ड, कैमरा itself and also shorty like आकाश mentioned. ये सब आपको more or less किट में मिल जाएगा। आकाश की फेवरेट मेमोरी कार्ड नहीं मिलेगा किट में। Oh, okay. That is an important information, guys. That is very important. So you'll have to buy a memory card अलग से। थोड़ी सी हम कैमरा सेटिंग्स पे बात कर लेते हैं। आप इतने एक्सट्रीम वेदर सिचुएशंस में होते हैं, कंडीशंस में होते हैं, क्या है सबसे बेस्ट कैमरा सेटिंग्स? सी मैं आपको 3 टेस्ट केस यूज केस बताऊंगा। ठीक है, आपका पहला यूज केस है व्लॉगिंग। ओके, व्हेन यू आर व्लॉगिंग मींस यू आर टॉकिंग इनटू द कैमरा। आप व्लॉग कर रहे हैं माउंट करके, एंड आल्सो आई विल शो यू माय व्लॉगिंग गियर ऑफ माय GoPro कि आपको आइडिया हो जाएगी मैं कैसे व्लॉग करता हूँ। तो अगर आप व्लॉग कर रहे हैं तो उसमें यूजुअली आपको स्लो मोशन की जरूरत होती नहीं है। तो मेरा रिकमेंडेशन है शूट इन 4K एंड 30 फ्रेम्स पर सेकंड। इसलिए जब हम आज के बजट के विषय बात करते हैं, पहला अमृतकाल का बजट है। इसमें दूरदृष्टि से एक आध कदम जो उठाना है उसका भी जिक्र किए हैं। साथ साथ जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी वंचितों को वर्चस्व देने के लिए जो बजट की बात होती है, इसमें इतने सारे अंश हैं जिसके द्वारा हर SC, हर ST और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन OBC इन सबको प्रावधान दिया गया है। And congratulations on your 5th consecutive budget, and of course you did mention just now that these have been really bad 5 years, some of the toughest times that our country has faced, but still we are right up there as a bright star. Now coming to this budget, you did put more money in the hands of employees, the middle class, but while they have more money in their hands, will the employers be willing to pay them more? Is the question that, have you incentivized employers also to try and give more money to people? First of all, when you look at the economy, you can see that it is very clearly showing signs of robust revival. When robust revival happens, and especially when you take the example of the services sector, the kind of attrition which that sector is facing, but at the same time, because they are moving towards greater and greater use of technology, sophisticated technology, they are seeking also people with such skills. So to pay better is also to pay better for people with the required skills, and that's why Government of India has in this budget, through various different ways, underlying the need for skilling, upskilling and also skilling for Industrial Revolution 4.0. In that we placed specific emphasis, because skilling is one thing, upskilling is there, but today the world is moving towards greater use of
Web3. And for that, if Industry 4.0 is coming up, employees also will pay more when you have people with adequate right kind of appropriate skills. We are spending that kind of money and bringing in that kind of training for people to be better paid. So government is pushing it from a different supply side readiness. Obviously that will have to be absorbed by the industry. आपने कौशल विकास योजना के 4.4 चरण की बात की, जिसके लिए 3 साल का समय दिया गया, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आम जनता जो सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट बजट में है वो आपका नया टैक्स रिजीम जिसका आपने ऐलान किया, उसके पीछे का रैशनल थोड़ा सा हमें समझाइए कि जब 2 रिजीम आपने पहले लॉन्च की, जिसमें एक में एग्जम्पशन बिल्कुल नहीं है, दूसरे में एग्जम्पशंस के साथ है, तो आप क्यों ये नई रिजीम को लेकर के मिडिल क्लास के लिए आए? कभी भी भारत के डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर चर्चा जब होती है जी, उसमें चर्चा 2 विषयों पर होती है कि टैक्स रेट को कम करो, दूसरा टैक्स को इतना कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ। इधर एक रेट कम हो रही है मगर दूसरे जगह पर सरचार्ज को इंक्रीज कर रही हो, तीसरे बोलते हो कि आप इंश्योरेंस लो फिर आपको एग्जेम्पशन देंगे। सो कॉम्प्लिकेशंस के कारण ओल्ड रेजिम अगर आपको बेनिफिशियल लगता है, आपको ही वो कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है। इसीलिए ओल्ड रेजिम के बारे में बहुत सालों से बहुत सारे कमिटियों भी रिपोर्ट दिया कि उसको सिंप्लीफाई करो। और टैक्स इवेशन का और टैक्स अवॉइडेंस का एक मुख्य कारण ये होता है कि जब रेट ज्यादा रहते हैं लोग अन्य रास्ते ढूंढते हैं जिससे उससे बच पाएंगे। अगर रेट कम हो जाता है लोगों के मन में अच्छा ठीक है इतना ज्यादा नहीं है, पे करो। सो इन सब को मन में रखते हुए ही 2 साल पहले हमने सेकंड रेजिम टैक्स रेजिम ले आए जिसमें रेट कम था, मगर इस बार हम उसमें रेट भी कम किया, स्लैब्स पे बढ़ाया और हर एक का हर स्लैब का टैक्स रेट भी कम करवाया और उसमें आखिरकार सरचार्ज जिसके वजह से भारत में सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स रहते हैं उसको भी एकदम बड़ा सा हिस्से में 37 से 25 है, वो बहुत काफी रिडक्शन है जी। जहां 43 तक चले जाता है रेट, अभी 39 के सीमा पर ही रहेगा। सो जितने भी सजेशंस था सिंप्लीफाई करो, रेट कम करो, कंप्लायंस को ज्यादा बढ़ावा दो, वो सब अभी इस न्यू सिस्टम में कर दिया और उसको डिफॉल्ट सिस्टम बना रहे हैं। मतलब आप जब फाइलिंग करने के लिए कंप्यूटर को ओपन करेंगे यही फॉर्म आपको पहले आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपलसरी इसमें रहना है। अगर आपको ओल्ड सिस्टम में रहना चाहिए तो रहिए, मगर ध्यान से आप निर्णय करिए कि इसमें न्यूअर सिस्टम में इतना बेनिफिट के बावजूद भी आप कुछ कारणवश ओल्ड सिस्टम में रहना चाहते हैं तो रहिए। मतलब धीरे धीरे एग्जेम्पशन रेजिम से छोड़ करके हम नया रेजिम को लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये आज घोषणा है। और अगर मैम मुझे फॉलो अप करने के लिए आप अलाउ करें तो मैम बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पिछले रेजिम में या ओल्ड रेजिम में जिसका आप कह रहे हैं कि अभी ऑप्शन है लॉन्ग टर्म की सेविंग के लिए लोगों के पास ऑप्शन होता था कि वो रिटायरमेंट के लिए वो पीपीएफ में, एनपीएस में या दूसरे एटीसी के एग्जेम्पशंस में जाएं जिससे कि उनके पास कुछ पैसा बचा रहे। लेकिन नई रेजिम में ये सारे एग्जेम्पशंस नहीं होंगे, तो आप क्यों मानते हैं कि ये ज्यादा ल्यूक्रेटिव है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लंबी अवधि के निवेश को उतना ज्यादा प्रोत्साहन नहीं देगा। आप इस सोच को ही बदलना है। जब रेट कम है और आपके हाथ में पैसा बचता है, आपके मर्जी जहां लगाना है। ओल्ड रेजिम में रेट भी ज्यादा, आपको प्रोत्साहन भी दें, आखिर नेट आपको वही बचता है। इधर वो प्रिटेंशन नहीं है कि हम रेट ज्यादा रख करके मगर आपको एक आध एग्जेम्पशन दे करके हमें प्रोत्साहन भी दे रहे हैं मगर टैक्स भी ज्यादा कलेक्ट कर रहे हैं। इधर रेजिम सिंपल है, उतना टैक्स ना पे करो, कम पे कर दो, बचा हुआ पैसा से आप फ्यूचर प्लानिंग करेंगे या तो बच्चे के ऊपर कुछ खर्च करेंगे, वो आपकी मर्जी। मैं ये मानती हूं कि टैक्स पेयर को हम इतना कम आंकड़ा ना करें, उनको मालूम है उनके पैसा को कैसे उपयोग करना है। Now, the simplification of taxes has obviously going to increase the compliance, and it's
also helped in the formalizing of the economy because a lot more people are, willing to participate. And you did mention a lot about that and about the formalization of the economy. The question is the informal sector. Is it, merging into the formal sector on a natural course, or do you need to draw them in? Are you giving some incentives to them to try and, formalize themselves? Yes, we are trying to make sure that people get onto the formal because of the incentives that we are giving for digital payments also. And when people put their account more on the formalized routine, we are also, like for instance, one of the announcements that we made today for MSMEs and professionals is that if your 95% operations are all formal, inclusive of check, not really necessarily digital, but even if it is check-based, into a banking system kind of thing and not cash, we are still giving you a higher level of, showing your claims. So then there are ways in which, this is one example, but there are very many other examples through which we are promoting the informal sector to gain from formalizing. So if they are small MSMEs, they take this ECGLS loan, they want it, it gives them better unsecured credit, they can come in, once they come in, they're formalized. Right. The 59-minute loan giving which happened through the digital format where people could convey to the bank that they wanted, and formally in principle 59 minutes you get the loan, and after that without visit into the bank you still get the bank assistance. These are ways in which we are formalizing. मैम, आज एक देश ने बहुत ही ज़बरदस्त तस्वीर देखी जब आप माननीय राष्ट्रपति जी के साथ मिलने गई और दो महिला सशक्तिकरण का एक बहुत ही सर्वोत्कृष्ट उदाहरण जो कहेंगे आज के दिन में देश ने देखा है। बजट भी महिला सशक्तिकरण पे फोकस करता है, जिसकी प्रधानमंत्री ने बहुत तारीफ की। जब एसएचजीज के जरिए आप एक नया पैराडाइम शिफ्ट लाना चाहते हैं, एक नया कल्चर लाना चाहते हैं, और आपने कहा कि अमृत काल में ये एक बहुत बड़ा हथियार होगा आपके पास ग्रोथ को ड्राइव करने का, आपके मन में क्या है और कैसे एम्पावरमेंट आप करने जा रही हैं? वुमेन एम्पावरमेंट के जरिए ग्रोथ को कैसे आप टैकल कर रहे हैं? सिर्फ उदाहरण में रख रही हूँ, उदाहरण नहीं है, कंपैरिजन के लिए। स्टार्टअप के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 2016 में पॉलिसी ले आए, उसके बाद लगातार हर बजट में स्टार्टअप्स के लिए कुछ ना कुछ उनको फैसिलिटेशन करने के लिए किए। उसमें हमारी युवा, क्योंकि वो इतना इनोवेटिव है, स्टार्टअप्स लगातार बढ़ते आए नंबर में, आज 80,000 से ज्यादा है, मगर उनमें से 100 से ज्यादा ऑलरेडी यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। सो हमारे मन में अगर भारत देश में महिला हो पुरुष हो, उनको प्रोत्साहन सही समय पर पॉलिसी के तहत, उसमें डिस्क्रिशन नहीं है, उनको आपको कर रहे हैं इनको नहीं करेंगे, ऐसे नहीं। पॉलिसी के तहत जब सपोर्ट करते हैं और उनको सही महीने पर जो चाहिए वो करना, ना कि दिल्ली में बैठ करके आपके मनमानी। सो गाइज, आज हम हैं यहाँ पे विद द गैलेक्सी A14 5G एंड ये सैमसंग का नया बजट स्मार्टफोन है। लेट्स सी, इसको अनबॉक्स करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं इस डब्बे में एक फ़ोन है और नथिंग नीचे ऊपर सिम इजेक्टर टूल एंड अंदर इसके आई थिंक चार्जिंग केबल होना चाहिए। यप,
हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव में। मैं हूं अंकुर तनेजा। बगल में मेरी खड़ी है लेक्सस की RX, जो यहां ऑटो एक्सपो 2023 में यहां पर अनवील करी गई है। दो वर्जन है, 350h और 500h। 500h यहां पर खड़ा हुआ आप देख सकते हैं हमारे सामने है, एंड द कार लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग, स्पेशली इन दिस कलर। एंड यहां पर देखेंगे ये F स्पोर्ट की बैजिंग लगी हुई है। तो 500h में जो है वो F स्पोर्ट वाला वर्जन आता है, 350h में F स्पोर्ट नहीं आता है। डिजाइन की बात करें तो गाड़ी रोटेट हो रही है, थोड़ा जैसे गाड़ी रोटेट हो रही है वैसे मैं डिजाइन की बात कर लेता हूं। सो ओवरऑल देखिए, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन प्रॉपर SUV वाला फील इसके साइज से आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे क्लैडिंग थ्रू आउट दी गई है, पियानो ब्लैक में इसकी क्लैडिंग दी गई है। सो प्रीमियमनेस यहाँ पर झलक कर जरूर सामने आ रही है। एंड ओवरऑल टायर्स का जो अलॉय व्हील्स हैं वो भी सिंगल टोन में ब्लैक में यहाँ देखने को इधर मिल रहे हैं। फिर आऊँ पीछे की तरफ तो यहाँ पर थोड़ा वो कूपे वाला फील आता हुआ आपको देखने को मिलेगा। एंड पीछे की तरफ कनेक्टेड टेल लाइट यहाँ दी गई है, लेक्सस की ब्रांडिंग, RX 500h की ब्रांडिंग यहाँ डायरेक्ट फोर दिया गया है। एंड ये ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी साथ लेक्सस कह रही है, ये गाड़ी को प्रोवाइड कर रही है। एंड नीचे भी ओवरऑल जो बॉडी कलर है उसी को मैच करते हुए इसका बम्पर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो डो जो है उसमें एक छोटा स्विच दिया गया है, जिसको हल्का सा आप टच करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डोर्स सेंस कर लेंगे और वो खुल जाएंगे। फुल करने की जरूरत नहीं है। अंदर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो मामला है शाही, साथ ही साथ स्पोर्टी झलक कर पूरा आ रहा है। ये बड़ा सा स्क्रीन यहाँ पे दिया गया है सेंटर में, गाड़ी फिलहाल अभी ऑन नहीं है, बट साइज देख के आप समझ जाएंगे मामला काफी शाही और काफी टेक फ्रेंडली यहाँ पर होने वाला है। पावर बटन यहाँ पे दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी फुल डिजिटल देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में जो है सिस्टम को कंट्रोल करने के बटन, राइट साइड में क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट वाला सब फीचर्स यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहे हैं। स्पेस की बात करूँ, USB-C चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है। एंड कुछ सामान रखने की और जगह यहाँ पर देखने को मिल रही है। कप होल्डर्स हैं, यहाँ पर 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। एंड ओवरऑल जो इंटीरियर है, सेंटर कंसोल और सीट की बात करूँ तो लेदर स्टिच यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा वेलवेट टच भी इसकी सीट में दिया गया है। तो कमी किसी तरह से भी गाड़ी को प्रीमियम बनाने में लेक्सस ने इस RX में नहीं करी है। इसके अलावा स्टीयरिंग फ्लैट बॉटम है, स्पोर्ट की बैजिंग भी यहाँ देखने को मिल रही है। एंड डोर्स में भी सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल करा गया है, यहाँ पे देखेंगे। एंड लेदर स्टिच यहाँ पे सेम वुड टोन में, रेड टोन में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी इसमें HUD डिस्प्ले दिया गया है। एंड डैशबोर्ड का ओवरऑल फील जो है वो भी सॉफ्ट टच वाला ही देखने को मिल रहा है इस लेक्सस की फ्रंट रो में 500h की। इसके अलावा पीछे मामला कितना शाही है, हालांकि स्पोर्टी ओवरऑल सीट्स का डिजाइन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। एंड स्पोर्ट की बैजिंग हेडरेस्ट में भी यहाँ पे दी गई है। पीछे चलते हैं, वहां मामला कैसा है एक बार उसको देखते हैं। साउंड सिस्टम की बात करूं तो मार्क्स एंड लेवेंसन का सिस्टम, साउंड सिस्टम इसमें दिया गया है। एंड रियर सीट भी आप देखेंगे वही सेम रेड टोन में, ब्लैक और रेड का इस्तेमाल थ्रू आउट द कैबिन यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड वो स्पोर्ट जो स्पोर्टी फील है वो यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट्स के मिलने के बाद बनती हुई आपको दिखाई देगी। पीछे भी 100 दी गई हैं। एंड यहाँ पर USB-C चार्जिंग पोर्ट हैं, 2 AC वेंट्स दिए गए हैं। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे एक ये आर्मरेस्ट भी देखने को मिल रहा है। यस, कुछ ऐसे ही खुलता है। 2 कप होल्डर्स हैं एंड कुछ सामान रखने की जगह यहाँ पे भी देखने को इधर मिल रही है इस लेक्सस की RX 500h में। एंड ऑफ कोर्स ये पैनोरामिक सनरूफ वाला मामला भी यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहा है। तो मामला शाही स्पोर्टी से भरा हुआ है। कहीं भी किसी तरह से मुझे नहीं लग रहा कि गाड़ी में स्पोर्टी एलिमेंट्स की कमी है। एंड ऑल्सो वो प्रीमियम फील भी बरकरार दिखता हुआ यहाँ पर जरूर लग रहा है। कुछ अब नंबर्स की बात कर लेते हैं इस लेक्सस के RX 500h के बारे में। सो वेरिएंट्स जैसे मैंने बताया, 2 वेरिएंट्स हैं, RX 350h और RX 500h। और इस 500h में F Sport परफॉर्मेंस का ऑप्शन दिया गया है। एंड इसके साथ साथ Welcome back, viewers. We are joined by the VC of Niti Aayog, Mr. Berry. Mr. Berry, good evening. Thank you very much for speaking to Times Now. Thank you for speaking to me. Simple and direct questions to you. A lot has been made, of course, about the reformist streak of this budget, the fact that allocations, for example, to the agricultural sector or on policies that benefit the farmers have been pruned, and there is a general thrust towards lessening entitlement and increasing the empowerment quotient. The opposition says that this is a callous government that has forgotten
about the welfare of farmers. The word poverty and several other adjectives to describe the disadvantage have not even been used in the budget. Unemployment, joblessness, none of them figure in the budget speech. And only twice has the word poor been mentioned. How do you respond to this? Rahul, I would say that, in all societies, there is a central left point of view and a center right point of view. The center right point of view, which I think this government has been repeatedly re-elected to express, essentially believes in empowerment, in safety nets, but in what economists call agency of the individual rather than handouts. Okay? So I think the budget has a very clear logic to it. It does derive from the perception of the vision of the Prime Minister at the Red Fort. India should aspire to be a developed country by 2047, and developed is a matter of, yes, per capita income, but it is also a matter of agency and choice. Now, as I see it, what this budget is doing is acknowledging the fact, and this was acknowledged yesterday in the economic survey as well, that there are continuing global headwinds, and then is looking for ways to empower, your word, many pockets in India which are capable of compensating from the demand drag that is coming from the external sector, both in terms of trade and also finance. So that to me is the logic, and if you like, I can talk about, as it were, all of those latent pockets of activity that this government or this budget is trying to activate. But if you believe that you've had enough recitation of that, we can talk about other things. But I would say that, for example, the focus on self-help groups, empowering them, makes me it strikes me as very reminiscent, actually, of the journey that Italy went in the 20 or 30 years after the war. Italy has now emerged as a fashion capital of the world. It wasn't always so. We today are at the per capita income of Italy in 1953. Okay? And so I think one thrust of this budget is to say we have our Vishwakarmas, we have our self-help groups, we have our one district, one product. India is an entrepreneurial and creative society which has, in many ways, been ignored by the growth thrust of the past. And this is an opportunity, as people are trying to recover from COVID, of unlocking the energy and the talent in some of the more forgotten parts of the society. Okay, well, one way of doing that, of course, is to also ensure that... I don't regard this as callous. As callous. You don't regard this as callous. So let me ask you, because... Yeah, please go ahead. The finance minister made a large sort of, what should one say, symbolic move to suggest that she had sort of wanted to benefit the middle class, and that she was handing out some tax rebates to the middle class. Now, it turns out that these rebates will only apply to those who are moving
to the new tax regime. First things first, Mr. Berry, how many people actually do fall in the new regime net? Could you first tell us that? Because the opposition says that this is a eyewash because the number of people in the new tax regime are less. And why would they want to move to the new tax regime? Because if they were to do so, to use your word, safety net, that safety net that the old tax regime provides would go. On your first point about what has been the migration pardon me, from the old to the new, that is something that belongs in the Department of Revenue. I can't answer that. Why hasn't the government released that number? There is always again, you know, I'm a part of government, Niti Aayog, which you know, deals with the longer term, but I don't. So I don't have an answer to that. But there have been plenty well, Mr. of Berry, other the reason I'm asking you this question for these questions is because if one were to test and the I'm finance answering, minister I'm on the coming to merit the of her answer. claim that a large number of the middle class are going to benefit from this particular rebate, then surely one must know what are the number of people who subscribe to the new tax regime. Surely that follows, doesn't it? I would reframe what you're saying, Rahul, in a different way. I would say that the Prime Minister, that the Finance Minister has been very specific that they would like the new pension, tax regime to become the default regime, and they are creating incentives for that migration. So this is the way in which reform is done. I think you're wrong to say that this is, in some sense, a trick. They have clearly stated that in the interest of modernizing the direct tax regime, they are moving in the direction of all tax systems worldwide, which is to simplify and eliminate exemptions. There are beneficiaries of exemptions under the old scheme, and they have left that choice up to each taxpayer. This strikes me as both fair and a reasonable reform strategy. So I'm not sure quite why you believe there's sharp practice here. No, I'm glad that you've actually clarified that you want to incentives have been provided for that transition. So you want to make the new tax regime, the new tax regime, the new default regime. That's what you want to do, and that's really what it is all about. Sort of transferring a set of taxpayers from the old to the new. That's really, and you call that reform. Well, the opposition says that you're removing the safety net, and that these exemptions then fall by the wayside, etc., etc. So could you explain? Rahul, I mean, I think the proof of the pudding will be in the eating. I mean, does the transition occur or not? Okay, well, I suppose if people really wanted to avail of the advantages that you suggest, or the reform that you suggest is exemplified by the new tax regime, they would have moved by now, and that's perhaps the reason why the government hasn't made those figures public. It would be interesting to see those figures, because that would tell us whether the public really accepts this. But nonetheless, I just want to ask you a final question before I let you go, because we're running out of time. There have been a number of subsidy cuts. Now, you've said that this is not carelessness, that this is really an attempt to modernize our economy and move it forward. So I'll just ask you, and lay it bare there. Why haven't we then brought in farmers into the tax net? Why should rich farmers, who perhaps earn as much as maybe well-off lawyers and doctors, not be made to pay the same tax rates? You are, aware of the sensitivity of this
issue, and I think you have to accept that a budget has to be alert to the political context in which it is being framed. If you're asking me whether that is a direction in which India in time should move, I would agree that efficiency would suggest that that's a direction in which to move. If you're asking me why did this budget not do it, I would say that may have been an unrealistic expectation. Given the fact that we have an election in about 15 months. Fair enough. I think you're being very honest here, Mr. Suman Berry. My final question, divestment targets have been lowered. Why is that, sir? Well, I think partly it is to ensure realism in the budget. I mean, there's no point of having targets that you can't achieve. I think there has been a lot of ambition in the past. Again, I think there's been a strong thrust towards realism in the budget, and again, to some extent, Niti has been involved with these discussions in the past, and the question of whether implementation could take place in this year or not must have been one issue. There is an overhang from divestment targets in the past. Those did not form a part of the budget speech, but I think the issue is really to deliver on what has previously been But I suppose the same constraints, the same political constraints before an election apply here too. The reason I asked you this question was because I understand that the Kisan is a vital vote bank. Clearly the middle class is not seen as one, and therefore to raise money, once again, the middle class is being sort of prodded and has really not got substantial relief, even though there has been a push in that direction. Rahul, I have to stop you there. Okay. I mean, do you believe that the people who ride on Vande Bharat trains are not middle class? Do you believe that people who ride Delhi Metro are not middle class? These are all the ways in which the middle class benefits from the infrastructure investments of this economy. Yeah. Well, I didn't say, actually, you're running out of time. I agree with you. I agree with you, Mr. Berry. I completely agree with you. It's just that the finance minister made the point in her budget, not Rahul Shivshankar, that the time had come to give back something to the middle class. The question is, has it been substantive enough, or was it just symbolic? That's what I was trying to get out. But it's been a wonderful conversation. I wish we could have a deeper one, perhaps for the weekend. We will. Thank you, Mr. Berry, for being very upfront here tonight. I'll take a short break. We'll be right back, viewers. iQOO 11 हो गया इंडिया में लॉन्च एंड विदाउट वेस्टिंग एनीबॉडीज टाइम इट्स टाइम टू अनबॉक्स दिस डिवाइस. बट बिफोर आई डू दैट अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. हाय, यू वाचिंग गैजेट टाइम्स. दिस इज मी पावनी जैन और अब करेंगे इस बॉक्स को अनबॉक्स. एंड नाउ इट्स टाइम टू अनबॉक्स दिस हैवी रिटेल बॉक्स. इससे आपको पता चलेगा कि iQOO 11 के रिटेल बॉक्स में व्हाट ऑल कंटेंट्स डू यू गेट इनसाइड. लेट्स बिगिन. सबसे पहले आपको दिखाई देगा स्मार्टफोन, जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं. एंड दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट ऑफ कोर्स यू एक्सपेक्ट इनसाइड द रिटेल बॉक्स. इसको निकालते हैं रैपर से जल्दी से. काफ़ी ही बढ़िया कलर ऑप्शन, एकदम एग्जैक्ट प्योर वाइट. इस कलर ऑप्शन का नाम है लेजेंड, जो कंपनी ने दिया है. पंच होल कैमरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑन द डिस्प्ले.
पर बात तो करेंगे रेयर पैनल की। यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये रेसिंग स्ट्राइप। फॉर दिस पर्टिकुलर डिवाइस आईकू हैज पार्टनर्ड विद BMW M Sport। तो यहाँ पे आपको वो रेसिंग स्ट्राइप्स दिख रहे हैं, काफी वाइब्रेंट कलर्स हैं, रेड, ब्लैक एंड ब्लू, जहाँ पर आईकू की ब्रांडिंग भी है। कैमरा मॉड्यूल इज रियली वेरी बिग, रेक्टेंगुलर है, जिसमें 3 कैमरास आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर V2 की भी ब्रांडिंग है क्योंकि कंपनी ने इस स्मार्टफोन में दिया है V2 ग्राफिक चिप। इसी के साथ कैमरास की बात करें तो जो इसका मेन कैमरा है दैट इज अ 50 मेगापिक्सल एंड इफ यू गाइस कैन लुक एट द कैमरा मॉड्यूल, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है और इसकी फील तो बहुत ही बढ़िया है। वाइट है और थोड़ा टेक्सचर्ड है, देखने में काफी सुंदर। और मैंने काफ़ी स्मजेस भी डाल दिए हैं ऑन द डिस्प्ले। इसको स्टार्ट करते हैं, साइड में रखते हैं और फिर देखेंगे बाकी के कंटेंट्स।